Construct Life. It is a workshop of self-connection, self-contemplation, self-comprehension and life construction. It is all about decoding your subconscious mind, your thoughts, your emotions, and all the unconscious identities that you hold within. It is all about constructing your life by erasing all the events and memories that are not good for your ultimate good, by re-imprinting the negative and destructive patterns, and by awakening the Shakti of mind and emotions. So ये इवेंट को हमें संभालना, तो डिकोड करना मतलब खुद को पहले जानो कि अंदर चल क्या रहा है, जब तक डिकोड नहीं कर पाओगे तब तक समझो में कैसी भी कौन सी आइडेंटिटी मैंने पकड़े रखी है, कौन से बिलीव्स मेरे ऐसे हैं जो मुझे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। So always smile. The moment you smile and you laugh, कोई भी शो देखते ना मुझे ऐसा लगता है तो स्माइल करते हो, सबकॉन्शियस को मैसेज आता है कि ये ठीक है, अब वो आपको सपोर्ट करेगा। उसको लगेगा कि तुम ठीक नहीं हो तो वो तुमको सारे पिक्चर्स बताएगा अब तक के जितने भी है डरावने, तो सारी आवाजें तुमको देगा। उसका काम है ना, वो तो तुम्हारी कमांड को, मैंने बोला ना बोलो ना, तुम जैसे उसको बोलोगे, जो भी तुम उसको ये करोगे वो तुम्हारी ओबे करेगा, उसको सिर्फ तुम्हारी कमांड को ओबे करना है। तुमने स्माइल दे दी, उसको लगेगा कि अब तो सब ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, आप तो स्टेट आ गई तो तुम्हारी यहाँ पे ठीक हो गई। But wherever you are, there has to be growth. Otherwise, you will decay. You will start decaying. There are only two things happening: either you decay or you grow. Yes. Helps you to know the purpose of your life. एक बात हमेशा रखना, हमारा जो भी मिशन है, पर्पस है, उसमें दो चीज होती है हर इंसान में, वो इंसान कैसा भी हो और कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता, हर इंसान को ग्रो करना है और हर इंसान को कंट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है। That what I take out of these 4 hours and do it regularly. If I say once in a week, twice in a week, thrice in a week, do these 2 exercises, those major that I believe, the last one and to visualize yourself. If I keep doing, I can become what I want to, what I can imagine myself, or what I really want me to be. It was very good actually listening to you, and usually I've listened to many listeners on YouTube and all. वो लोग बोलते हैं कि visualize करो. I've tried n number of times to visualize few things, but it's not my forte actually. मतलब मैं नहीं कर पाते. Here also, yeah, I started visualizing थोड़ा बहुत तो at least. So that was the best part कि यहाँ पे practically जो हुआ, जो आप practically करवा रहे थे, so that at least that helped me to visualize, भले थोड़ा blurry or whatever it is. We tend to forget sometimes, na? What is our strength and everything. So that helped me also to rethink. Would you be able to do the techniques? You know, I think empathize with our own self to find out where we are and what we need to change in our lives. That is very important. And I think it is more of an exercise that you need to do every day, which I really like that. Your techniques are awesome, and I feel so energetic. I became so happy. I'm more confident and I feel that I'm capable of doing many things. हाँ, आज की टेक्निक्स में ये होगा, हम लोग का स्लोगन है I am the creator of my own destiny. तो वो डेस्टिनी का आज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा. Nice.
न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। वो कंप्लीट कर दिया और टीवी ब्लास्ट तो जो बचा कुचा था वो उसमें चला गया। ग्रेट। तो जो एक्स्ट्रा में पड़ा था वो भी निकल गया। अच्छा था मूवी देखनी। I mean, the best part was I used to think, or I used to say that मैं मेरे spiritual path में grow करने की वजह से I lost on my career progress, so I need to stop that. But you've got the answers? Yeah?